Hello guys, welcome back to Literary Tutorial by Nisha Mangla. Our today's topic is Gayatri Spivak, and I would be giving you the biography, achievements, highlight, works, important important information from the exam's point of view, and along with that few questions would be asked, so you have to stay tuned till the end so that you can answer the questions. Okay, let's start with the important writer, Gayatri Spivak. Gayatri Spivak. She is known, her work is known basically for post-colonial structuralism, literary criticism, deconstructive reading of Marxism, feminism, and पोस्ट colonialism. मीन्स उसने सिर्फ एक टाइप का काम नहीं किया था, उसने बहुत सारे टाइप ऑफ काम किए थे जिसमें फेमिनिज्म भी आ जाता है, पोस्ट colonial जो इश्यूज है उनको भी उन्होंने रेस किया, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म के बारे में भी बात की, डिकंस्ट्रक्टिविज्म के बारे में भी बात की, तो सभी चीजों को इन्होंने हाईलाइट किया अपने काम में. सो शी इज अ मल्टीटास्कर. Now Gayatri was born in 1942 in West Bengal, Kolkata, to solitary metropolitan middle-class parents. She belonged to the first generation of Indian intellectual after independence. A more interest perspectively, she claims that was the midnight children who were born free by chronologically accident. She did her undergraduate work in English at the University of Calcutta. सबसे पहले उन्होंने University of Calcutta से अपना BA पास किया, undergraduate किया, ठीक है, graduating with the first class honor. फिर उन्होंने बाहर जाने के लिए, आगे अपनी पढ़ाई pursue करने के लिए, she borrowed money to go to US in the early 1960s to do the graduate work at Cornell University, which she chose because she knew the names of Harvard, Yale and Cornell. अभी उसको कुछ ही यूनिवर्सिटीज के नाम पता था, तो उनमें से इनको कॉर्नल यूनिवर्सिटी जाना था अपने आगे की पढ़ाई करने के लिए. वहां से she received her MA in English from there. Afterwards उन्होंने शुरू किया पढ़ाना at the University of Iowa. While working on her PhD, her dissertation was on Yeats. अब Yeats के ऊपर इन्होंने अपना dissertation लिखा. तो अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है किसके ऊपर लिखा, तो you need to know. And the title is I remake the life and poetry of W.B. Yeats, जो इनको डायरेक्टर था पाउल डे मैन के द्वारा. Then उसके बाद इनका इंटरेस्ट डिकंस्ट्रक्शनिज्म में ज्यादा था, तो she ordered De La Grammatologia out of a catalogue in 1967 and began to work on the translation. राइट, तो उन्होंने ट्रांसलेट किया, जो इनका सबसे इम्पोर्टेंट वर्क है, ये जो है इन्होंने काम किया था ऑफ ग्रामेटोलॉजी में, उससे ही इन्होंने ट्रांसलेशन शुरू किया, जो इनका सबसे मान्य काम है. Her translator's introduction to Derrida's Of Grammatology has been variously described as setting a new standard for self-reflexivity in prefaces, and absolutely unreadable, its only virtue being that it makes Derrida that much more enjoyable. जो इन्होंने ट्रांसलेशन की है उससे जो दरीदा को पढ़ना आसान भी हो गया और enjoyable भी हो गया है. She is a university professor at Columbia University and a founding member of established Institute for Comparative Literature and Society. In 1978, she joined the University of Texas at Austin as professor of English and Comparative Literature. In 1982, she was appointed as the Longstreet Professor in English and Comparative Literature at Emory University. और 86 में इन्होंने University of Pittsburgh में she became the first Mellon Professor of English. 91 में she became member of faculty at Columbia University.
तो ये आपको जानना सब जरूरी है। इसके बाद मैं आपको इम्पोर्टेंट बताऊंगी, इम्पोर्टेंट वर्क्स जो इन्होंने किए थे, लिखे थे। शी इज बेस्ट नोन फॉर हर ऐसे कैन सबाल्टर्न स्पीक। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ऐसे है, इसके बारे में भी आप जान लीजिए क्या इम्पोर्टेंट है। Translation of an introduction to Jacques Derrida's De la Grammatologia. She also translated such works of Mahashweta Devi as imaginary maps and breast stories into English, and with separate critical appreciation of text and Devi's life and writing style in general. So she has interest in Mahashweta Devi also. अब इनके अचीवमेंट्स तो बहुत इम्पोर्टेंट है। 2012 में इन्होंने क्योटो प्राइज इन आर्ट एंड फिलोसफी इनको मिला था, एंड 2013 में पद्म भूषण, द थर्ड हायर सिविलियन अवार्ड गिवन बाय रिपब्लिक ऑफ इंडिया। अब एडवर्ड सईद ने इनके बारे में बोला था, शी pioneered the study in literary theory of non-Western women and produced one of the earliest and most coherent account of that role available to us. Her critique of a post-colonial reason जो इन्होंने पब्लिश किया था 1999 में, explore how major work of European metaphysics not only tend to exclude the subaltern from their discussion, but actively prevent non-European from occupying position as fully human subject. मतलब इन्होंने subaltern जो था उनके ऊपर बहुत ज्यादा emphasis दिया, और इसी जो इनका वर्क था A Critique of Post-Colonial Reason है जो 1919 में पब्लिश किया, उसमें भी इन्होंने बताया कि सबाल्टर्न्स को जो यूरोपियन कंट्रीज है कैसे उनको अपने सब्जेक्ट से बाहर निकाल देते हैं, राइट। इसमें से इन्होंने लॉन्च किया था कंसेप्ट ऑफ सैंक्शन्ड इग्नोरेंस फॉर द रिप्रोड्यूसिंग एंड फोरक्लोजिंग ऑफ कॉलोनिस्टिक स्ट्रक्चर। फिर इन्होंने एक टर्म हमें कॉइन की थी, स्ट्रेटेजिक एक्जिस्टेंशियलिज्म। अब इसका मतलब क्या है? इट रेफर टू अ पॉलिटिकल टैक्टिक इन विच माइनॉरिटी ग्रुप्स, nationalities or ethnic group mobilize on the basis of shared gender, culture or political identity to represent themselves. So आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि इन्होंने कौन सा टर्म कॉइन किया था। जूडिथ बटलर, जब टेरी ने इनको थोड़ा सा नेगेटिव रिमार्क किया था तो जूडिथ ने इनको सपोर्ट किया था, एंड शी सेड Spy gave us the political landscape of culture in its obscurity and proximity. She added that Spivak's supposedly complex language has resonated with and profoundly changed the thinking of tens of thousands of activists and scholars and continue to do so. मतलब वो इतना बेहतरीन काम कर रहे हैं कि उनके सारी जो थिंकिंग की प्रक्रिया है उसको ही चेंज कर दिया है। तो अब और भी ये न्यू चीजें लेके आ रहे हैं जो हमारे लिटरेचर में इम्पोर्टेंट है। अब कैन द सबाल्टर्न स्पीक, जो इम्पोर्टेंट टेक्स्ट है उसके बारे में हम कुछ जान लेंगे। इट इज अ वर्क which was written in 1985 addressed the issue of the oppressed third world women, particularly in terms of Indian women and their practice of sati, self-immolation, following the death of their husband. मतलब इसमें जो pitiable condition, miserable condition of the women है, especially of the third world, उसके बारे में इन्होंने बताया है। The origin of the question as to whether the subaltern can speak find itself in the question of whether a woman can really choose whether she wants to be immolated or not. According to her, अब क्वेश्चन है, ये कुछ एमसीक्यूज हैं। अब यहाँ तक हमारा ये इनके बारे में, क्योंकि इनका जो मेन टेक्स्ट है वो ग्रामेटोलॉजी है और कैन सबाल्टर्न स्पीक। अब यहाँ से इनके एमसीक्यूज शुरू हो जाते हैं। तो फर्स्ट वन इज, अकॉर्डिंग टू गायत्री स्पाइवक, व्हाई कांट द सबाल्टर्न स्पीक? बिकॉज शी इज म्यूट, बिकॉज the subaltern is an anonymous entity and thus cannot be trusted,
in a position of disempowerment? This course is impossible because the subaltern is considered to be insane. The answer is C. Position of disempowerment. Next is, in Gayatri's essay, the position of subalternity is exemplified by the tribal of Pritha, the Hindu widow who immolates herself on the pyre of her dead husband, the nationalist who died during the Great Bengal Famine, Lord William Bentinck. The answer is B. The Hindu widow who immolates herself on the pyre of her dead husband. Next question is, Gayatri Spivak first came to international limelight through her translation of the work of which author? Can, Diman, Shweta Devi, Jacques Derrida. The answer is Derrida. Jacques Derrida. D. The term subaltern was coined by whom? Antonio Gramsci, Spivak, both, or none? So what is the answer? Answer is Antonio Gramsci. So first one. So this was all about today's video. I hope you like it. If you like it, please subscribe and share to my channel. Thank you.